Hello, friends. I'm Vivek. Welcome back. And today, in Boost Your Vocabulary Series 4, we are going to continue from where we have left yesterday. Series 4 Vocabulary Booster के इस हिस्से में हम कल जहाँ खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे. We have been discussing words starting from A, इनका meaning, उनका example, plus synonyms and antonyms. And let me tell you this, these words are extremely important that we guys have been discussing because by using these words, you can surely boost your vocabulary plus enhance the quality of your language. If you want to speak impressive English, if you want to have decent communication skills, then let me advise you, you should surely go through these words and start using these words in your day-to-day communication so that you can surely boost your language skills. Now, before we start, friends, just drop a like and hit the subscribe button. And wherever you see the bell icon, just smash it. Now, let's get started, friends, because time is of essence. And the very first word that we guys have today is allure. Allure. I'll just spell this word for you, Allure. And once again, I forgot something. If you're wondering where exactly these words are, अगर आपको जानना है, ये सारे words मैंने कहाँ mention किए हुए हैं, plus इनका meaning, example sentences, antonyms, synonyms, उनका example sentences. Then I have mentioned these things in the description option. You can click on the description and you'll find all these words there. So the very first word that we have is allure, Allure. Now, what is the meaning of allure? The meaning of allure is to entice or to attract someone. किसी को attract करना. वहां पर आप allure का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसको example sentence के जरिए हम समझते हैं. The beautiful melody of the music enticed her and held an irresistible allure. जो म्यूजिक था, जो संगीत था, जो गाना था, उसका जो धुन ने उसको अट्रैक्ट कर लिया और उसे बांधे रखा, रस्सी से नहीं, अट्रैक्शन से. नाउ इनकी दो सिनोनिम्स एंटाइस एंड फैसिनेट. सो अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट, इनका सिनोनिम्स है एंटाइस एंड फैसिनेट. Now let's try to make one sentence. The exotic flavors of the dish fascinated the food enthusiast. Now the sentence is the exotic flavors of the dish fascinated the food enthusiast. जो फूड से जो उसका जो फ्लेवर था उसने खाने के शौकीनों को एकदम अट्रैक्ट कर दिया. अब इसका एंटोनिम उल्टा क्या होगा? दी ऑपोजिट. अट्रैक्ट का होता है रिपेल या रिपल्स. रिपेल दूर कर देना, रिपल्स कर देना. अट्रैक्ट मतलब पास लेके आना, रिपेल या रिपल्स उसे दूर कर देना. एंटोनिम का एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, द फाउल ऑर्डर repulsed her and caused her to move away instead of being allured by it. The foul order. फाउल का मतलब गंदा, यहाँ ऑर्डर का मतलब होता है गंध. तो उसने जो गंदी स्मेल आ रही थी उसने उसे वहां से दूर भगा दिया. सो अल्योर वर्ड है, इसका मीनिंग है अट्रैक्ट. सिनोनिम्स है एंटाइस, another one is fascinate. Antonyms are two. Number one is repel. Number two is repulse. Now let's go to the second word. Second word है ascend. Ascend. I'll repeat this word. The word is ascend and synonym. The spelling is ASCEND. Ascend. अब ascend का क्या मतलब होता है? Before that, there are like a few viewers here. Good evening, Rolling Stone. Good evening, Improve English with Shweta man. It's nice to know that you guys support me. And now let's cut to the chase and dive into the activity, the thing that we guys were doing. So ascend, ASCEND, इसका मतलब होता है to climb or to go up. One example sentence is, they decided to ascend the mountain to enjoy the breathtaking view from the top. सो असेंड का मतलब ऊपर जाना, सीधा ऊपर मतलब ऊपर नहीं जाना, मतलब सीधा ऊपर जाना. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, दे डिसाइडेड टू असेंड द माउंटेन टू एंजॉय द ब्रेथ टेकिंग व्यू.
इसका ये मतलब है एकदम वो पहाड़ के ऊपर गए, क्यों गए? कूदने के लिए नहीं, वहां से जो ब्रेथ टेकिंग व्यू है, ऐसा व्यू जो वो मतलब आपको एकदम खुश कर देगा, उसका एंजॉय करने के लिए, उसके मजे लेने के लिए वो पहाड़ पे गए। अब इसका सिनोनिम है क्लाइम प्लस एस्केलेट। क्लाइम मतलब चढ़ना, एस्केलेट का मतलब ये होता है ऊपर जाना, जैसे आप एस्केलेटर्स जो ऑटोमेटिक स्टेयर्स आपने देखा होगा इन मेनी प्लेसेस, एस्केलेट। नाउ इसका एक सिनोनिम का एग्जांपल सेंटेंस है, द हाइकर्स embarked on their journey to climb the steep trail. I'll repeat the example sentence. The hikers embarked on their journey. जो हाइकर्स थे मतलब जो पैदल ही ट्रेकिंग वॉकिंग करते हैं, उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसी की? मतलब जो स्टीप ट्रेल था, जो रास्ता था एकदम चढ़ाई वाला रास्ता था, उस पर चढ़कर। अब असेंट का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर जाना। इसका एंटोनिम है नीचे जाना। क्या कह सकते हैं? डिसेंड कह सकते हैं, एंड we can also use decline. One good example sentence is, after reaching the peak, they began to descend the mountain instead of continuing to ascend. इसका ये मतलब है, मतलब पहाड़ के चोटी पर पहुंचकर उन्होंने क्या किया? अब ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, राइट? तो फिर वो नीचे चले गए and उन्होंने कूदा नहीं. So the example sentence is, after reaching the peak, they began to descend the mountain instead of continuing to ascend. Now हमने दो वर्ड प्रैक्टिस किया है, allure मतलब attraction, ascend मतलब ऊपर जाना। तीसरा वर्ड है, the third word is amplify. amplify का क्या मतलब होता है? जैसे amplifiers होते हैं, राइट? हम तेज तेज आवाज बजाते हैं। सो एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा कर देना, उसके तीव्रता को, उसके इंटेंसिटी को, उसके इफेक्ट, असर, प्रभाव को बड़ा कर देना, एम्पलीफाई कर देना। सो एम्पलीफाई का मैंने आपको मतलब बताया, राइट? टू ऑगमेंट और टू डीपन, to enlarge something. And example sentences, the speaker used a microphone to amplify her voice and reach a larger audience. तो इस बार स्पीकर ने क्या किया? उन्होंने माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। किस लिए? अपने आवाज को बुलंद करने के लिए, एकदम एम्पलीफाई करने के लिए, so that she could reach a larger audience, ताकि उनकी आवाज larger audience तक पहुंच सके। नाउ इसका सिनोनिम्स है ऑगमेंट। ऑगमेंट, AUGMENT, ऑगमेंट, या फिर डीपन। नाउ डीपन का मतलब होता है गहरा कर देना या बढ़ाई देना। सो सिनोनिम का एक एग्जांपल सेंटेंस इज, the artist used shading techniques to deepen the contrast in the painting. The artist used what? उन्होंने शेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। शेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्होंने जो कॉन्ट्रास्ट था पेंटिंग की, जो टेक्निकलिटीज थी, उसको उन्होंने डीपन कर दिया। नाउ पीपल, लेट्स गो टू द एंटोनिम। बढ़ा देना या उसको चौड़ा कर देना या एम्पलीफाई कर देना। इसका एंटोनिम है लेसन, LESSEN, घटा देना, लेसन कर देना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देना, सिकुड़ा देना। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट, और एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, मतलब श्रिंक कर जाना। सो वन गुड एग्जांपल सेंटेंस इज, द गवर्नमेंट took measures to lessen the impact of the economic crisis instead of amplifying it. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने कदम बढ़ाए, कुछ कदम बढ़ाया। किस लिए? जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कम करने के लिए, महंगाई उगाई को कम करने के लिए। तो ये वर्ड था एम्पलीफाई, इनका सिनोनिम ऑगमेंट एंड डीपन, प्लस इनका एंटोनिम लेसन या कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द फोर्थ वर्ड दैट वी हैव इज arraign. Arraign. The meaning of arraign is to incriminate or indict someone in court. So किसी को मतलब सबूत के साथ दोषी साबित कर देना, मुजरिम साबित कर देना, accused साबित कर देना। So the word is arraign, मतलब पूरे प्रूफ के साथ, बिना मतलब हवा हवाई बातें नहीं करना है। So
arraign. One good example sentence is the prosecutor planned to arraign the suspect for the alleged crime. जो prosecutor, जो वकील साहब थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी. किस चीज की तैयारी? जो भी सस्पेक्ट था, जिस पे भी शक था, उसको मुजरिम साबित करने की. लेकिन कैसे? जज साहब को रिश्वत देके? नो, by with the help of evidence, proof के साथ. So the sentence is the prosecutor planned to arraign the suspect for the alleged crime. Now इसका synonym होगा incriminate या indict. Incriminate या indict. So one good example sentence is the evidence gathered was used to indict the suspect and build a case against them. So the evidence, जो सबूत को इकट्ठा किया गया, किस लिए इकट्ठा किया? So that they could indict the suspect. जिस पे भी शक था, उसके खिलाफ एक solid case तैयार करने का. And now let's go a bit further. अब इसका हम लोग एंटोनिम देखते हैं. एंटोनिम है exculpate, exculpate and pardon. एक्सकल्पेट का क्या मतलब होता है? पार्डन मतलब माफ कर देना. जो गलती होने के बाद आपने कोई भी गुनाह किया, गलती की, उसके बाद फिर आपको माफ कर दिया गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकल्पेट और पार्डन. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एग्जाम्पल सेंटेंस. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है द न्यू एविडेंस एक्सकल्पेटेड द डिफेंडेंट एंड लेड टू देयर पार्डन इंस्टेड ऑफ arraigning them. द न्यू एविडेंस, जो नया सबूत आया, उसके जरिए जिसपे पहले दोष लगा था, उसे निर्दोष वो साबित हो गए और उनको पार्डन, माफी भी मिल गई. So people write a lot of, like we have gone through 4 words already. These words are ascend, amplify, arraign and amplify, and allure also. 4. Now the 5th word that I have for you is audacity. Audacity. Audacity का मतलब होता है ज़रूरत, हिमाकत, boldness, हिम्मत, courage. So जब भी हम ज़रूरत की बात करें, हम audacity का इस्तेमाल कर सकते हैं. One good example sentence is he had the audacity to speak up and challenge the authorities' decision. मतलब उसके अंदर हिमाकत थी, हिम्मत थी, ज़रूरत थी. किस बात की? ताकि वो जो भी अथॉरिटी थे, जिनके हाथ में भी पावर था, उनके सामने वो मतलब उनके जो डिसीजन है, राइट, उसको वो चैलेंज कर सके. He had the audacity to speak up and challenge the authorities' decision. Now इसका synonym है boldness या courage, हिम्मत, and synonym है the explorer's daring actions showcased his audacity and courage. जो explorer थे, जो घूम घूम कर दुनिया ढूंढ रहे थे, नए नए सी रूट्स या कोई भी पहाड़, नदी, व्हाटएवर, उनका जो एक्शन था, उनका वो क्या दर्शाता था, क्या दिखाता था? करेज, हिम्मत. सो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? हिम्मत का, बोल्डनेस का, करेज का, माइल्डनेस या कावर्डिस, डरपोकपना. So one good example sentence is his mildness and reluctance to take risks contrasted with the audacity of his peers. It's an advanced level sentence, people, and that's the reason why we are discussing these advanced level words. And these words are surely going to like boost your language skills. So the example sentence is his mildness, मतलब उसकी जो उसका जो डरपोकपना था, and reluctance to take risk, और जो रिस्क नहीं लेने का जो डर, वो उसे अलग बनाता था. किससे अलग बनाता था? अपने दोस्त लोग के साथ, अपने कंपैट्रियट्स के साथ, जो भी उनके साथ काम करते थे या जो भी उनके साथ एसोसिएटेड थे. सो पीपल, अगेन a wonderful word, audacity. इनका synonym है boldness and courage. Antonyms है mildness and cowardice. And I believe these examples, along with the words, the synonyms and antonyms, will help you in boosting your language range, plus your communication style. And if you really like this video, then please drop a like. Subscribe to the channel if you haven't already. And if you have any questions,
or any topic on which you want me to make like any specific videos, then do not hesitate to mention those things where in the chat option. And again, I thank you very, very much, folks, for being a part of this session. And take very good care of you. I'll meet you tomorrow with the fifth part of the series. Until then, take very good care of yourself. May God bless you.